404 வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றியிருக்கிறோம். மீதி இருக்கக்கூடிய 101 என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஒன்றிய அரசாங்கம் அங்கே பல இடைஞ்சல்களை நமக்கு ஒவ்வொரு நாளும் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது. இங்க வர வேண்டிய ஏர்போர்ட் கூட இன்னைக்கு இல்லை, முடியாது என்று நிராகரித்திருக்கிறார்கள். இங்க இருக்கக்கூடிய நம்முடைய தம்பி டி.ஆர். ராஜா அவர்கள் நிச்சயமாக உறுதியாக வந்துவிடும் என்கிறார். அது எதை நிறுத்தினாலும் அது செய்து காட்டுவதுதான் திராவிட மாடல் ஆட்சி. அதனால ஒன்றிய அரசாங்கம் எதை தடை செய்தாலும் அதை நிறைவேற்றி காட்டுவோம். அதனால மீறி இருக்கக்கூடிய 101 நீங்க நிதி தராம இருந்தாலும் சரி, எத்தனை தடைகளை உருவாக்கினாலும் அதையும் நிறைவேற்றி காட்டுவோம் என்ற உறுதியோடு உங்களை சந்திக்க வந்திருக்கிறோம். உங்களுடைய கருத்துக்களை கேட்டு அந்த கருத்துக்களை நிச்சயமாக தேர்தல் அறிக்கையிலே எதெல்லாம் சாத்தியமோ அந்த தேர்தல் அறிக்கையிலே அதெல்லாம் இணைக்கப்படும் என்ற அந்த உறுதியை. What was your discussions on the regional politics? Because I remember you were in Pakistan in October, and this is something that the External Affairs Minister said in his opening remarks. So can you give us a sense of what was discussed in terms of the regional politics and the regional situation that India is facing? Well, we all have regional concerns, and we all have neighbors, and with neighbors you have opportunities and challenges. So yes, we did discuss it, and as I said at the beginning, on terrorism we are on in one mind. And of course, we also have concerns. India took part in the Zapat exercises in Russia that we find threatening. So I was very glad that we were able to discuss frankly what's on our minds. How does Poland assess the current security situation in Eastern Europe? Well, Poland has historically been invaded by Russia many times. Russia has taken huge swathes of our territory in the past. I'm one of the European politicians who tried to encourage Russia to be on a convergent trajectory with the European Union. But that requires living in peace with your neighbors. And when Russia started invading her neighbors, that ruins everybody's sense of security. Russia overestimated its capacity to conquer Ukraine and has now been fighting this bloody war for longer than the Soviet Union fought Nazi Germany, and is still fighting in Donbass, and is taking huge casualties for tiny slivers of territory. So we hope that sanity prevails in Moscow and that Russia ends this war. But of course that depends on one man. And in the meantime, unfortunately, instead of spending our money on health systems, on education and other desirable things, we are having to spend it on armaments. Poland has the highest proportion of GDP in NATO, 4.7%. We've created, as the European Union, the safe mechanism for retooling our defense industry, 150 billion euros, of which Poland will be the biggest beneficiary. And we have loaned Ukraine 90 billion euros so that Ukraine can sustain its defense for another 2 years. We hope that Vladimir Putin recalculates whether he can afford to continue this. We were not part of that. Our job is the screening of candidates once these names come up to us through the state election committee. It is not our purview to talk beyond that.
Dil mange more? No. They'll discuss it amongst themselves. But always more the merrier. For all sides. Are you also demanding cabinet? Those are political questions, and see, we are going to stick together. So we have husbands and wives who have some tiffs. They don't separate. We come together and we work it out. Parents have some differences with their siblings, with their children. So okay, we work it out. We'll work it out. But there are talks about, inside your Congress leadership only, that there's a lot of people preferring TVK and certain other parties to join into the alliance. How do you see this? There are opinions. There are as many opinions as there would probably be people. So that's okay. These opinions are collated, they are pulled in together, and then the High Command takes the final call. But we are very confirm and sticking with the DMK. We are with the India Alliance, and I'm sure it's going to hold strong, and we are coming back. We have a very capable Chief Minister Right. coming back. So then Ramshan is expected to visit that. No date I am aware of, but he'll be coming frequently. ये कार्यकर्ता सम्मेलन है और वो भी पूरे गुजरात का नहीं है। पूरे गुजरात में 7 जोन है, उसमें से एक जोन की 5 लोकसभा के बूथ कार्यकर्ता यहां पे आए हुए हैं और जितनी नजर दूर दूर तक जा रही है, इतने लोग, इतना बड़ा संगठन मैं समझता हूं बीजेपी के पास भी नहीं है, जितना धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के संगठन का विस्तार होता जा रहा है। और ये इसका एक ही कारण है, जिस तरह से भय और अत्याचार भारतीय जनता पार्टी ने चारों तरफ फैलाया हुआ है और जिस तरह से लोग बीजेपी से परेशान हो चुके हैं, धीरे धीरे जनता के मन से अब डर निकलता जा रहा है और जनता सामने आती जा रही है। 30 साल से बीजेपी ने केवल भय और अत्याचार और भ्रष्टाचार के जरिए गुजरात के ऊपर शासन किया है। Amongst the members of the delegation were His Highness Sheikh Hamad bin Zayed Al Nahyan, the Managing Director of the Abu Dhabi Investment Authority, His Highness Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, the Deputy Prime Minister and Foreign Minister of the UAE, His Highness Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, the Crown Prince of Dubai, also the Deputy Prime Minister and the Minister of Defense of the UAE. And also His Highness Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Zayed Al Sultan, who is the Deputy Chairman of the Presidential Court. In addition, there were the Secretary General of the Supreme Council for National Security, the Minister for Industry and Advanced Technology, the Minister of State for International Cooperation, the Minister of State for Artificial Intelligence, Digital Economy and Remote Work Applications, and the Minister of State for Defense Affairs. So as I said, even for this short visit, this was a really, really high-powered delegation that accompanied the President. कई योजनाएं चल रही है और मत्स्य के क्षेत्र में बिहार ने बहुत प्रगति किया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 के बाद से मत्स्य क्षेत्र में जो काम हुआ है और भारत सरकार ने जो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य को सहयोग किया है, उसके आधार पर आज बिहार में मत्स्य पालक राज्य आत्मनिर्भर हो गया और मत्स्य पालकों की आय बढ़ी। जब उत्पादन बढ़ेगा तो उनकी आय भी बढ़ेगी। और आज बिहार की ये स्थिति है कि बिहार के मछली बगल के राज्यों में निर्यात की जाती है, बगल के राज्यों में भी मछली जाती है। तो इसलिए और
हम आपको एक चीज बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में जो अलग अलग योजनाएं थी, उन योजनाओं का असर ये है कि आज पूरे देश में 11 साल में मत्स्य का उत्पादन दोगुना हो गया। 2013-14 में जितना था उसके आज डबल है। तो इसलिए मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी काफी काम हो रहा है। और अभी हाल फिलहाल में भी राज्य की सरकार ने मछली विभाग और मत्स्य पालन के लिए अलग अलग विभाग बनाया है, अलग अलग मंत्रालय बनाया है। I think you've all asked questions related to various geopolitical issues that have hit headlines from this region in recent times, whether it is the developments in Yemen or developments related to the conflict in Gaza or the situation in Iran. I can only tell you that all of these issues were discussed between the leaders. I cannot get into the details at this stage, but yes, both leaders had the opportunity to share their views and opinions in detail on these issues. Finally, the two leaders also had the opportunity to exchange views in detail on regional developments in West Asia, and they expressed support for all efforts in promoting peace, security, stability, and prosperity in the region. They unequivocally condemned cross-border terrorism and for the perpetrators, supporters, and financiers of all acts of terrorism to be brought to justice. The UAE president expressed his support for the success of India's chairmanship of the BRICS grouping this year, and as I said, also confirmed the UAE's high-level participation in the AI Impact Summit that is being held next month. The talks between the leaders, as I said, were characterized by the warmth and special friendship between the two leaders that has become a characteristic of this relationship. There is a detailed joint statement that is being issued, which will be uploaded as soon as we finish here, as also a list of outcomes from this visit. Let me quickly take you through the key outcomes that will, in a sense, define our bilateral engagement with the UAE in the immediate near future. First of all, a letter of intent was signed between the two sides to work towards concluding a framework agreement for a strategic defense partnership between India and the UAE. A letter of intent was also signed between the Indian National Space Promotion and Authorization Center, INSPACE, and the UAE Space Agency for a joint initiative for space infrastructure development and its commercialization. Under this particular initiative, we will look to setting up new launch complexes, satellite fabrication facilities, joint missions, space academy, and training centers. A letter of intent was signed on the UAE's participation in the development of special investment region in Dholera in Gujarat. This is a mega partnership initiative that will look at the establishment of an international airport, a pilot training school, an MRO facility, a greenfield port, a smart urban township, as well as projects related to railway connectivity and energy infrastructure. Amid this geopolitical situation, what Maharashtra will offer additional to the investors? See, what Maharashtra offers is credibility. So you don't have to offer anything more. In today's world, credibility is more than capital. And that is what Maharashtra has been doing. Whatever we have been saying, we have been delivering. And that is why you can see
a huge and renewed interest in investing in Maharashtra. Of course, the credit goes to our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who has created an atmosphere and an ecosystem where everybody wants to invest in India. And we are here just to tell everybody the Maharashtra story and just to tell them that in India, Maharashtra is the best place to invest. And any sector, specific sectors? Which No, we are targeting all sectors because we have a very diverse portfolio. And after we finish. में भी आपको एक शानदार जीत मिली है, तो क्या वेस्ट से भी बॉम्बे के लिए, मुंबई के लिए कोई स्पेशल एमओयूज हो सकते हैं जो मुंबई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? बिल्कुल होने वाले हैं, और विशेष रूप से हम जो तीसरी मुंबई तैयार कर रहे हैं, उस तीसरी मुंबई के लिए बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग निवेश देख रहे हैं, क्योंकि आज स्पेशली जो इंटरनेशनल फंड्स है, वो फंड्स भारत की ओर निवेश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन के रूप में भारत को देख रहे हैं। और आज हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, और स्पेशली जो न्यू मुंबई का एयरपोर्ट है, हमारा अटल सेतु है, और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, उससे एक बहुत बड़ा अर्बन एग्लोमरेशन तैयार हो रहा है। मतलब मैं अगर कहूँ तो करीब 675 स्क्वायर किलोमीटर का एक पूरा एरिया ये ओपन अप हुआ है, जहाँ पर हम लोग एक प्रकार से नई मुंबई बसाना चाहते हैं। वहाँ हम लोग एजू सिटी तैयार कर रहे हैं, वहाँ हम मेडी सिटी तैयार कर रहे हैं, हम स्पोर्ट्स सिटी तैयार कर रहे हैं, वहाँ हम इनोवेशन सिटी तैयार कर रहे हैं, वहाँ जीसीसी सिटी तैयार कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि थीम बेस्ड ऐसा एक बहुत हमारा अप्रोच बड़ा है कि जिसमें बहुत निवेश भी आएगा और बहुत अच्छे हाई पेड जॉब्स भी वहाँ पर। UAE has always been a premier energy partner for India, and therefore building on this comprehensive energy partnership, a long-term agreement for the supply of 0.5 million metric tons of LNG per annum was concluded during the visit. The UAE is now the second largest supplier of LNG to India. In addition, an MOU on food safety and technical requirements was also signed, which will provide for sanitary and quality parameters to facilitate trade, exchange, promotion of cooperation in the food sector, and encourage food products and other agricultural product exports from India to the UAE. It will benefit the farmers of India and contribute to food security in the UAE. What is the UDF and the Congress party going to do once they win the election? അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന തീർച്ച അത് പറയുമ്പോഴും അതിനേക്കാൾ ഗൗരവതരമായ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ അധികാരത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലെ ജനത കൊണ്ടുവന്നാൽ ഈ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ്. This is the question in front of the leaders of the UDF and the Kerala Congress. ആ ചോദ്യമാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിലും ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിലും ഉള്ളത്. There is a huge unemployment problem in this state. ഈ നാട്ടിൽ തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ പ്രശ്നം അതിരൂക്ഷമാണെന്ന് അറിയാത്തവർ ഇവിടെ ആരുമില്ല. The UDF and the Congress party have to provide a vision for Kerala which addresses this unemployment problem. തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ രൂക്ഷത അനുഭവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ മുമ്പിൽ അധികാരത്തിലേക്ക് ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി വന്നാൽ അവർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് കൃത്യമായി വരച്ചു കാണിക്കാൻ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മുമ്പേ കഴിയും. For any government to succeed, the leadership needs to be accessible to the people. ഏത് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും ഏത് സർക്കാരും അതൊരു വിജയമാവണമെങ്കിൽ നാട്ടിലെ ജനത സാധാരണക്കാരന് അവർക്ക് കയ്യെത്തും ദൂരത്തുള്ള ഒരു സർക്കാരായി ഈ ഗവൺമെന്റുകൾ മാറണം. The leadership has to merge with the people. ഈ നേതൃത്വം ജനങ്ങളുമായി ഇടപഴകി കലർന്നു വരണം. And I'm confident that the leadership of both the UDF and the Congress party is going to be humble, is going to
merge with the people of Kerala and is going to truly become an expression of the voice. And you must remember that the idea of the 73rd and 74th constitutional amendment was that of the Congress party. ഈ ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിൽ നാം ഓർക്കേണ്ടത് ഭരണഘടനയുടെ 73ഉം 74ഉം വരുന്ന പരിച്ഛേദങ്ങൾ ആ മാറ്റങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഭേദഗതികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഈ ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിൽ ഓർക്കേണ്ടതാണ്. The foundation of the constitution is one man, one vote. And the idea is that every single Indian citizen should have voice in the running of our country. ഭരണഘടന ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക്, ഒരു പൗരന് ഒരു വോട്ട് എന്നുള്ള നിലയിലാണ്. ആ ഒരു വോട്ട് ഓരോ പൗരന്റെയും ശബ്ദമാണ്. അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അനിവാര്യതയാണ്. If you look slightly deeply at the difference between the BJP, the RSS and us, the Congress party, you will see that they stand for centralization of power and we stand for decentralization of power. ആർഎസ്എസും ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള ആശയപരമായ അന്തരം അത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആർഎസ്എസും ബിജെപിയും ഭരണ സംവിധാനങ്ങളുടെ അധികാരത്തിന്റെ കേന്ദ്രീകരണത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വികേന്ദ്രീകരണം ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്നുള്ളത്. They want compliance from the people of India. They do not want to hear the voice of the people of India. अहमदाबाद में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं ताकि साइक्लोथॉन 2026 के बारे में आपको थोड़ा बता सकें. तो इस साल पिछले साल की तरह सीआईएसएफ साइक्लोथॉन का आयोजन कर रहा है. इस साल का जो हम साइक्लोथॉन का जो हम थीम है वो सुरक्षित तट समृद्ध भारत के तरह उसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इसको हम वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 बोल रहे हैं. ये इस साल हम 28 जनवरी से लेके 22 फरवरी तक आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कि 2 टीम्स, एक वेस्ट कोस्ट पे और एक ईस्ट कोस्ट पे हमारी जो साइकिलिस्ट की टीम है वो चलेगी. गुजरात में लखपत पोर्ट से शुरू होगा और टोटल 130 साइकिलिस्ट हैं, जिसमें कि 65 महिला और 65 पुरुष 6500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन को कवर करेंगे. और हर रोज़ हम एक कोस्टल विलेज में हमारे साइकिलिस्ट हॉल्ट करेंगे और हमारे जो आसपास के सीआईएसएफ के यूनिट्स हैं और ये साइकिलिस्ट हैं मरीन पुलिस और कोस्ट गार्ड्स के साथ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके इन विलेजेस में जैसे हम हॉल्ट करेंगे तो फिशरमैन कम्युनिटी से और लोकल कम्युनिटी से इंटरेक्ट करेंगे और सरकार की बहुत सारी स्कीमों के बारे में और सीआईएसएफ के रोल के बारे में, सीआईएसएफ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में और विकसित भारत के बारे में और किस तरह से हमें जो बहुत सारे कोस्ट लाइन के अलॉन्ग जो हमारे थ्रेट्स हैं, ह्यूमन स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिक,